Vibhasha, the new face of Lakme. Could you recreate the day look for Vibhasha? Sure. Comfort in dealing with the heat in Bombay, dealing with the heat in India, and Lakme is pretty durable for all of that. And I find this really good. I mean, this eyeliner, just a very simple line. Apple part of the eyes. I feel that it's quite, what you say, a perfect example of what we have in India in terms of skin tone and everything. Everybody is not super white. We have people like us also. It always adds to be a little bit glamorous. Could you tell us what you're using right now? Right now I'm using the sauce. It's kind of a matte finish. It doesn't have so much sparkle in it, and I think it's quite perfect for the daytime because it's not in your face. Ladies and gentlemen, we have a very special guest with us. क्लिंट आप बताइए कि आपने विपाशा को क्या मेकओवर क्या चेंज किया? एक्चुअली कुछ चेंज नहीं किया, ये लड़की वैसे भी खूबसूरत है. आई जस्ट ब्रॉट आउट हर ब्यूटी अ लिटिल मोर. जो कलर्स मैंने इस्तेमाल किया है, इट बेसिकली मैचेस हर स्किन टोन्स. जैसे मैंने पिंक इस्तेमाल किया है उनके आईज़ के लिए, ब्राउन लाइनर थोड़ा सा सॉफ्टनेस के लिए और डेफिनेशन के लिए, और लिप्स के ऊपर मैंने एक ग्लॉस इस्तेमाल किया विच इज़ नॉट टू स्पार्कली, लेकिन इट लुक्स लाइक एज इफ यू नो इट्स वेरी सॉफ्ट एंड नेचुरल. एंड देन ऑन हर चीक्स आई यूज्ड अ कॉरल शेड विच सूट्स हर स्किन टोन very much, and then shine powder. बस. किस तरह का स्किन टोन है इनका जो? I would say she's the best example of Indian skin tone. Okay. There's no better example than this, and what I've used is basically something which is universal to the country. So लड़की कहाँ पर भी हो, जैसे केरला में हो या दिल्ली में हो या शिमला या कहीं पर भी, she can do the same look and she'll still look good. विपाशा, आप अपने मेकओवर से खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ. जैसे कि क्लिंट ने बोला, बहुत ज़्यादा मैंने चेंज नहीं किया, पर जैसे क्लिंट ने बोला है कि इन्होंने मेकओवर नहीं किया है, पर इन्होंने जो कलर और जो शेड मुझे दिया है, आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक. तो आप एकदम जैसे हम जब फिल्मों में देखा जाता है तो मेकअप पूरा एकदम जैसे परत हो जाती है मेकअप की, तो उस तरह का मेकअप या इस तरह का मेकअप कैसे प्रेफर करेंगे? ऑफकोर्स इस तरह का प्रेफर ज़्यादा करूँगी जिसमें कम से कम मेकअप हो. आप अपने आप को एक्सपेरिमेंटल मानती हैं या फिर नॉर्मल, क्योंकि आजकल एक्सपेरिमेंट का ज़माना है, तो क्या फिल्मों में भी एक्सपेरिमेंट करना पसंद करेंगी? डेफिनेटली. बालों के साथ कितना क्या छेड़छाड़ कर सकती हैं आप? जो भी जिसमें जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी ऑफकोर्स वो करूँगी. उनके बालों के बारे में कुछ बताइए. इनका बाल Her hair is beautiful. What I've done is basically just crunched her hair and kept it more or less natural. And to be honest, ये look actually जो है look of summer है. Okay. Because the whole thing about women is being comfortable with how you look. It's not to try and look like somebody else. Look like yourself and be comfortable. So I've just crunched the hair and it's best kept like that. मैं straightening करता she'll go out in the heat and then it'll become curly. Okay. You know what I mean? So it is best to keep it natural and just bring out the beauty. And you see, it looks very sensual on her. आजकल जैसे एकदम बिजी शेड्यूल है, हर किसी को मेकअप करने का कोई या जो भी बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने का कोई बिल्कुल टाइम नहीं, तो उसके लिए किस तरह का मेकअप आप सजेस्ट करेंगे? I would say just use a compact, थोड़ा सा eyeliner definition के लिए, gloss on the mouth और थोड़ा सा shine powder, और उसके अलावा you don't need much more than that. मेरे से इनका Your personal beauty tips you give, ना what you. इनका खत्म होते तब तक आप सोचिए.
Well, I would say 5 beauty tips. One is to use a lot of sunscreen. क्योंकि summer के लिए you need sunscreen to protect you from pollution and everything. Use eyeliner because that gives you a definition, and you don't need to do much more than that, you know, because you can go out just like that. Gloss is very in for summer. Shine powder for the night, because shine is very in. It's nice to have a body that is shiny and looks a little bit glamorous also, and you can be a little bit naughty with shine that way. And keep your hair natural, and just be comfortable whatever you do. Okay. As he said, of course, sunscreen ज़रूर लगाना चाहिए. Secondly, gloss, star shine gloss. And third tips, I prefer kajal, so of course kajal. And then fourth and fifth is drink a lot of water and wash your face after each second hour.